Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Educational Implications of Operant Conditioning Theory. As we know that, operant conditioning theory is propounded by one of the eminent behavioral psychologists, namely B.F. Skinner. The theory is based on environmentalistic approach. How environment plays important role in order to modify the behavior of any organism. Dear students, in today's lecture, we will purely focus on how operant conditioning theory, its principles or laws, is used in the field of education. I mean to say we will discuss the various educational implications of operant conditioning theory. The main or major educational implications of operant conditioning theory are highlighted as under. Number 1. Reinforcement and rewards. Dear students, as we know that reinforcers or rewards are the environmental substances which help us to accelerate the rate of responses. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, if we have to shape the behavior of organism, we have to focus on various reinforcers as per the operant conditioning theory is concerned. किस तरीके से एक टीचर डिफरेंट reinforcers यूज कर सकता है in order to shape or modify the behavior of learner. It means learning is based upon use of reinforcements. Dear students, the teacher can use various primary reinforcers and secondary reinforcers in order to improve the performance of the learner. अगर हमें लर्नर्स को टास्क ओरिएंटेड बनाना है तो एक टीचर को वेरियस reinforcers का इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टीचर इज टीचिंग एनी डिस्कोर्स और सब्जेक्ट, it may be science, social science, language subject or mathematics. The teacher has to use various incentives, rewards in order to improve the performance or progress of the learner. जब भी एक learner कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो इंस्टीट्यूशन या टीचर की जिम्मेदारी बनती है वो बच्चे को इनकरेजमेंट करे, इंसेंटिव्स दे, रिवार्ड्स दे, स्कॉलरशिप्स दे and other reinforcers in order to make overall teaching learning process effective and goal oriented. That is why B.F. Skinner highly mentioned that the teacher who will properly use the reinforcers can improve the performance of the learner. And apart from it, the reinforcers can be used in other fields as well. चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो मेडिसिन है, कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ना है, हर एक जगह हम reinforcers का इस्तेमाल कर सकते हैं so that we will improve the performance of the individuals. जब एक वर्कर एक इंडस्ट्री में काम करता है, एक्स्ट्रा बोनस देने से, reinforcement और रिवार्ड देने से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है और ओवरऑल जो प्रोग्रेस है एक इंडस्ट्री की वो बढ़ जाती है. It means that growth and development of the industry is based upon use of reinforcers. I mean to say progress of both individual or the worker who is working in the industry and also progress of the industry is based upon use of reinforcers. Number 2, successive approximation.
Dear students, as we know that change is the law of nature. Everything and every element undergoes change. There is hardly any substance or any element which does not undergoes change. उमूमन ये देखा गया है, change is gradual. It is not quick and fast. It means whenever we have to shape the behavior of any untrained organism, so with the help of successive approximation, we can modify overall behavior of untrained organism. Successive approximation means change the behavior of organism step by step. I mean to say you slowly. Same is the case with the teaching learning process. Dear students, जैसे कि हम जानते हैं, teaching learning process is in between the teacher and the taught. Teacher always tries to modify or mold the behavior of learner in order to bring the perfection. I mean to say you lead the learner towards the holistic development, physical development, intellectual development, emotional development, social development, by and large, moral development. But all the developments cannot be possible without the successive approximation. It means change comes slowly. That is why there is famous quotation, slow and steady wins the race. अगर एक टीचर को एक लर्नर का बिहेवियर मॉडिफाई करना होगा, द टीचर शुड बिलीव ऑन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि एक लर्नर की चेंज एब्रप्टली नहीं आ सकती है, क्विकली नहीं आ सकती है. इट टेक्स टाइम दैट टू ब्रिंग द कंप्लीट चेंज इन द लर्नर. लर्नर को कोई भी स्किल सीखने में एक समय लगता है, एक टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो क्विकली नहीं सीख सकता है, बिकॉज देयर आर 5 फिंगर्स इन द हैंड एंड ऑल आर नॉट इक्वल. देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कोई लर्नर जल्दी सीखता है, कोई लर्नर यानी कि समय लेता है किसी स्किल को सीखने में, और कोई ऐसा भी लर्नर होता है जो बहुत समय लेता है किसी स्किल को सीखने के लिए. इसीलिए कि इम्प्रूवमेंट जो है इट टेक्स टाइम. इफ वी हैव टू मॉडिफाई और शेप द बिहेवियर ऑफ एनी लर्नर, आई मीन टू से यू, अगर टीचर को एक लर्नर का बिहेवियर मॉडिफाई करना होगा तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टीचर कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से हम एक लर्नर को प्रोग्रेस की तरफ ले सकते हैं. अगर एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है तो धीरे धीरे हमें गाइडेंस उसे करनी है, धीरे धीरे हमें उसे यानी कि स्किल्स सिखाने पड़ेंगे, सो दैट परफेक्शन विल टेक प्लेस. जैसे कि हम सब जानते हैं, इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर्स और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो हर एक काम को सीखने के लिए टाइम लेते हैं. दैट इज वाई ड्रिल मेथड इज मेंट फॉर देम. इसीलिए मेंटली रिटार्डेड बच्चों को कोई भी स्किल सीखने के लिए एक भरपूर टाइम की ज़रूरत पड़ती है. इफ़ वी हैव टू टीच टू द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर्स, इवन नॉर्मल चिल्ड्रन भी समय लेता है कोई टास्क सीखने के लिए. लर्नर को एक प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है ताकि उसमें स्किल कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाए. मोreover, successive approximation is not possible without the use of reinforcers. जब भी हमें एक लर्नर का बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो टीचर शुड ऑलवेज यूज द वेरियस reinforcers, rewards, encouragement and other incentives in order to properly shape the behavior of the learner.
in order to develop the skill competency or simply to bring the perfection in the learner. Number third, use of immediate and continuous reinforcement. Dear students, continuous and immediate reinforcement simply means the individual or organism should continuously give the reward or reinforcement in order to make the learning process effective, in order to improve the performance of the organism. Dear students, एक टीचर को चाहिए to use the continuous reinforcement schedule. जब भी एक लर्नर करेक्ट रेस्पॉन्स देता है तो हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे एक लर्नर को रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, ताकि अगर क्विकली हम उसे रीइंफोर्समेंट देंगे, रिवार्ड देंगे, उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी. पेस ऑफ लर्निंग विल बी इंक्रीज्ड व्हेन द टीचर विल यूज द immediate and continuous reinforcement. Dear students, if the learner performs any type of task, the teacher should give the immediate and continuous reinforcement. जब एक लर्नर ने पहला या पहली टास्क परफॉर्म की है तो उस टास्क को कंप्लीट होने पे उसे रिवार्ड की ज़रूरत है, और जो ही वो सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा सेकंड टास्क पे भी रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए. जब वो थर्ड टास्क परफॉर्म करेगा और कंप्लीट उसे करेगा तो उस पे भी उसे रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए. हर एक टास्क पे जब हम एक लर्नर को रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट देंगे, ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ इंप्रूव ही नहीं हो जाएगी बल्कि पेस ऑफ लर्निंग आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड, और लर्निंग टेंडेंसी जो एक ऑर्गेनिज्म में है, आई मीन टू से यू लर्नर में जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी. दैट इज वाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ इमीडिएट एंड कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट. एक बच्चा जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बच्चे को रिवार्ड मिलना चाहिए. अगर बच्चे ने रिवार्ड लिया तो रिवार्ड हासिल करने से बच्चे की जो पेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी. नाउ हियर इट इज़ नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स. वट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर असाइनिंग टू द स्टूडेंट, वट एवर द टास्क्स यू आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स, जो भी टास्क्स आप लर्नर को देते हैं, और अगर एक टीचर या इंस्टीट्यूशन एक लर्नर को कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देगी तो उस रीइंफोर्समेंट से सिर्फ बच्चों में इम्प्रूव ही परफॉर्मेंस नहीं होती है बल्कि उनके जो रेस्पॉन्स होते हैं वो क्विक आ जाते हैं, और ओवरऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है या परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर जो है वो इफेक्टिव बन जाती है. नंबर फोर्थ, यूज ऑफ पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल. डियर स्टूडेंट्स, partial reinforcement schedule is that reinforcement schedule in which we give the reinforcement or reward to the organism sometimes, and sometimes we are not giving the reward or reinforcement. यानी ये वो reinforcement schedule है जब एक organism को कभी reinforcement या reward मिलता है, कभी उसे reward और reinforcement नहीं मिलता है. It means the experimenter sometimes gives the reinforcement to the organism and sometimes holds the reinforcement. यानी कि कभी reinforcement organism को मिलता है, कभी organism को reinforcement नहीं मिलता है. Now if we will look through the prism of education, so far as teaching learning process is concerned, as we have already discussed, it is the interaction between teacher and taught. टीचर भी हर वक्त एक बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं दे सकता है बिकॉज देयर इज मैटर ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल, और अपार्ट फॉर इट देयर आर अदर रीजंस व्हाई द टीचर शुड also rely on partial reinforcement schedule.
क्यों एक टीचर को ऑलवेज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल नहीं देना चाहिए, और इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्यों टीचर को पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में एक ऑर्गेनिज्म को कभी रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड मिलता है, कभी उसे नहीं मिलता है। अगर हम एक टीचर की बात करेंगे, टीचर को भी कभी रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, कभी रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टूडेंट हैज परफॉर्मड एनी टास्क, किसी टास्क पे उसे रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, रिवार्ड और इंसेंटिव मिलना चाहिए, किसी टास्क पे नहीं मिलना चाहिए। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइजेस हियर, क्यों एक लर्नर को यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल देना चाहिए? कभी उसे रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, कभी उसे रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। द मेजर एडवांटेज ऑफ पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटिंक्शन। पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्शन से बचाता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, एक्सटिंक्शन सिंपली मीन्स नॉन अकरेंस ऑफ द रेस्पॉन्सेस। जब एक ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सेस नहीं देता है तो हम उस स्टेट को एक्सटिंक्शन कहते हैं। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ही ऐसा शेड्यूल है, जब एक लर्नर को हर एक टास्क पे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो उसे लीस्ट चांसेस होते हैं एक्सटिंक्शन के शिकार होने के। Dear students, that is why the bigger advantage of partial reinforcement schedule is it protects the learner from extinction. The teacher should use the partial reinforcement schedule, क्योंकि एक लर्नर में एक आदत सी पड़ जाती है कि उसे किसी टास्क पे रीइंफोर्समेंट मिलता है, किसी टास्क पे उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। तो रीइंफोर्समेंट पे भी वो काम करता है, अपनी टास्क्स को परफॉर्म करता है, अपनी एकेडमिक्स को आगे ले चलता है, और जब उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता भी है तब भी वो काम के साथ लगा रहता है। सो दैट इज व्हाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इट बिलीव्स ऑन partial reinforcement schedule should be also used. It has having much more significance not only in teaching learning process. चाहे आप मेडिसिन की बात कर लो, चाहे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लो, हर एक सर्विस सेक्टर में पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यूज किया जा सकता है। नंबर 5, यूज ऑफ वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। Dear students, as we know that variable reinforcement schedule is that type of schedule in which the reward or reinforcement is given to the organism on unpredictable number of responses. यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे पता नहीं होता है कि मुझे कब रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड मिलने वाला है, कब मुझे नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स इट इज टोटली बेस्ड ऑन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस। द वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है, चाहे वो कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है या पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, तमाम रीइंफोर्समेंट शेड्यूलों में से स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है, बिकॉज इट इज ओनली दैट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट जहां पर एक ऑर्गेनिज्म की मोटिवेशन थ्रू आउट द होल टास्क रहती है। अगर हम एक लर्नर की बात करेंगे, टीचर शुड आल्सो यूज द वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोटिवेशन अमंग द लर्नर्स, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस पे मिलता है। इसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, यानी कि कभी भी लर्नर को रीइंफोर्समेंट
दिया जा सकता है। और लर्नर्स में जब आदत पड़ जाती है कि हमें अचानक रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो वो कंटिन्यूअसली अपनी लर्निंग के साथ टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। और टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर एक्सप्रेस कंटिन्यूअसली करने से अचानक उन्हें रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। दैट इज नोन एज वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। वी कैन ऑल्सो इंप्रूव द परफॉर्मेंस और लर्निंग ऑफ द टीचर एज वेल। जैसे कि हम सब जानते हैं, टीचर्स भी थ्रू आउट द सेशन कंटिन्यूअसली लर्निंग सिचुएशन में रहते हैं। दे परफॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। क्योंकि जो स्कूल इंस्पेक्टर होता है वो सरप्राइज विजिट स्कूल को करता है, एंड व्हेन द स्कूल इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर चेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, जिस टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है तो उसे इंकरेजमेंट मिलती है, रिवार्ड मिलता है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। एज पर यूएसए इज कंसर्न, वहां पर वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अचानक टीचर्स की परफॉर्मेंस चेक हो जाती है और जिस टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है तो उसे ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, रीइंफोर्समेंट मिलता है। एज पर आवर एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न, हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, यानी कि आफ्टर 30 डेज बैक हर एक टीचर को सैलरी मिलती है, ना कि उसकी सैलरी जो है कम हो जाती है ना बढ़ जाती है। दैट इज फिक्स्ड। बट इन केस ऑफ यूएसए, फिनलैंड, वहां पर वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक लर्नर की परफॉर्मेंस या एक टीचर की कॉम्पिटेंसी अचानक एसेस की जाती है और इवैल्यूएशन के दौरान अगर टीचर और लर्नर्स की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है तो उसी के हिसाब से रीइंफोर्समेंट भी मिलता है। एंड इट इज द ओनली रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, आई मीन टू से यू variable reinforcement schedule is only that reinforcement schedule which continuously motivates the both learner and teacher throughout the learning situation. Number 6, elimination of negative behavior through extinction. यानी कि with the help of extinction we can eliminate the negative behavior among the learners. Dear students, as we know that learner possesses both good qualities and bad qualities. Learner has chance also pick the good habits and as well as bad habits. अगर एक लर्नर में नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो गया या बैड क्वालिटी डेवलप हो गई तो उस बैड हैबिट को एलिमिनेट करने के लिए we have to extinct that behavior. How negative behavior will be eliminated? With the mechanism of extinction, we can eliminate or eradicate the negative behavior among the learners. For example, learner में bullying है, एक लर्नर दूसरे लर्नर को बुली करता है, टीज करता है, अब्यूज करता है, या अपार्ट फ्रॉम इट लर्नर में एग्रेशन है या सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। द लर्नर ऑल्सो पॉजेसेस द नेगेटिव बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ थेफ्टिंग, लूटिंग, पिक पॉकेटिंग एंड अदर एंटी सोशल बिहेवियर्स और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। इन बिहेवियर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक्सटिंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। हाउ वी विल एलिमिनेट दीज बिहेवियर्स? Whenever the learner will express any negative behavior, the learner should not be given the reinforcement. एक लर्नर को उस वक्त पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, मनी, एनकरेजमेंट। तो जब हम नेगेटिव बिहेवियर पे लर्नर को एनकरेजमेंट नहीं करेंगे, जब एक लर्नर को
रिवार्ड नहीं मिल जाएगा, इंसेंटिव नहीं मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली जो लर्नर है वो इस क्वालिटी को अपने आप में से एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। या टीचर कैन आल्सो यूज द डिसअप्रूवल। अगर नेगेटिव बिहेवियर पे हम डिसअप्रूवल एक लर्नर को कभी देंगे तो डिसअप्रूवल से या सोशल कंडमनेशन से जो लर्नर में बैड क्वालिटीज है, बैड क्वालिटीज है, नेगेटिव एटीट्यूड जो उसमें है, रॉन्ग हैबिट जो है, वो आराम के साथ हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपली वी कैन से दैट जब भी एक लर्नर नेगेटिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है तो उस वक्त टीचर को कोई भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए, चाहे प्राइमरी रीइंफोर्सर्स या सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स, किसी पॉजिटिव रीइंफोर्सर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड टाइम विल कम व्हेन द लर्नर विल रियलाइज मुझे इसलिए रिवार्ड नहीं मिलता है क्योंकि जो बिहेवियर मैं एक्सप्रेस करता हूँ इट इज़ सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड द अनडिजायरेबल बिहेवियर। और वक्त के साथ साथ वो तमाम जो उसमें अनडिजायरेबल बिहेवियर है, चाहे वो पिक पॉकेटिंग है, लूटिंग है, थेफ्टिंग है, एग्रेशन है, बुलिंग है, टीजिंग है, एब्यूजिंग है, जो भी नेगेटिव बिहेवियर एक लर्नर में है वो एलिमिनेट धीरे धीरे हो जाएगा। नंबर 7, यूज ऑफ सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। Dear students, as we already know that broadly reinforcers are classified into two categories: primary reinforcers and secondary reinforcers. Primary reinforcers are those reinforcers which promote the survival to the organism. Those are purely biological in nature. For example, food, water, oxygen, moreover the sleep. These are all primary reinforcers. How these reinforcers promotes the survival? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म प्राइमरी रीइंफोर्सर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। प्राइमरी रीइंफोर्सर इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ वाटर या स्लीप। एक इंसान स्लीप के बगैर जिंदा रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इट मे बी 1 मंथ ऑल्सो। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्लीप ना करना एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ द बायोलॉजिकल रीइंफोर्सर, इट इज़ द प्राइमरी रीइंफोर्सर। विदाउट द प्राइमरी रीइंफोर्सर organism cannot sustain the life. And apart from the primary reinforcers, there are the secondary reinforcers which are non-biological in nature, जो biological in nature नहीं होते हैं. For example, grades, prizes, incentives, encouragement. These are various secondary reinforcers. और जो secondary reinforcers है, these plays very important role in order to improve the performance of an organism. तो एक टीचर को सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करना चाहिए. जब एक टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता है और बच्चे को करेक्ट रेस्पॉन्स पे प्राइजेस देने चाहिए, स्कॉलरशिप्स एक लर्नर को मिलनी चाहिए, गुड ग्रेड्स मिलने चाहिए, और टीचर भरपूर इंकरेजमेंट देना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के दौरान, क्योंकि इंकरेजमेंट से बच्चों का जो मॉरल है वो डेवलप हो जाता है. बच्चों को हौसला अफजाई करने से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है. दैट इज वाई सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स आर कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर्स. Especially teachers should use the various secondary reinforcers in the form of prizes, medals, scholarships, monetary benefits, and also to visit, I mean to say you to promise the students to visit zoo, picnic spots or excursions. बच्चों को प्रॉमिस करना, अगर आपने ये काम सही किया या आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, गुड परफॉर्मेंस दिखाई, तो हम आपको जू पे लेके जाएंगे, तो हम आपको एक्सकर्शन लेके जाएंगे. सो दीज आर ऑल द सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स.
Secondary reinforcers plays important role in order to motivate the learners. Number 8. Avoidance of punishers. Dear students, when we look through the prism of operant conditioning theory, so teacher should not use the punishers by and large or any negative type of reinforcement. टीचर को अधिकतर नेगेटिव reinforcement या पुनिशर अवॉइड करना चाहिए. नो डाउट नेगेटिव reinforcement से, पुनिशर से हम एक लर्नर का बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. बट नेगेटिव reinforcement एंड पुनिशर, it has having the, I mean to say you, bad repercussions. Because punisher or use of negative reinforcement, जब भी एक टीचर पुनिशर का यूज करता है या नेगेटिव reinforcement का यूज करता है, it leads the learner in the psychological state. Psychological state is that state in which the learner has maximum chance that to become the victim of depression, stress, anxiety, fear and other types of mental health related issues. इसीलिए कि it has addressed to the टीचर्स कि नेगेटिव reinforcement या पुनिशमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चांस होते हैं कि एक लर्नर को साइकिक सेंटर्ड बनने में. और इट हैज़ रिसर्चिकली प्रूव्ड दैट कि जब पहले नेगेटिव reinforcement और पुनिशर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था तो उस वक्त लर्नर को चांस होते हैं कि स्कूल छोड़ने में, वो वेस्टेज का शिकार हो जाता था, वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता था. बिफोर कंप्लीटिंग द स्कूलिंग देयर वाज चांस दैट लर्नर यूज्ड टू लीव द स्कूल. स्कूल फोबिया बच्चों में पैदा हो जाता था और लर्निंग भी जो है वो इफेक्टिव नहीं हो जाती है जब हम ज़्यादा नेगेटिव reinforcement और पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज़ वाई देयर शुड बी द अवॉइडेंस ऑफ पुनिशर्स, क्योंकि पुनिशर यूज़ करने से बच्चे में डिस्करेजमेंट हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है वो गिर जाती है. लर्नर की साइकोलॉजिकल वेलबींगनेस मेंटेन करने के लिए द टीचर शुड नॉट यूज द एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ पुनिशर एंड नेगेटिव reinforcement. Number 9. Teaching through programmed learning. Dear students, as we know that the concept of programmed learning is given by B.F. Skinner. What is programmed learning? It is that type of learning in which the learner is given the small frames of information. जब एक लर्नर एक फ्रेम को कंप्लीट करता है तब उसे दूसरा फ्रेम दिया जाता है. जब दूसरा फ्रेम वो कंप्लीट करता है तब लर्नर को तीसरा फ्रेम दिया जाता है. जब वो तीसरा फ्रेम कंप्लीट करता है तब उसके बाद उसे चौथा फ्रेम, पांचवा फ्रेम, छठा फ्रेम, सातवां फ्रेम आहिस्ता आहिस्ता से उसे कंप्लीट लर्निंग की तरफ लेते हैं. एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज प्रोग्रामड लर्निंग. यानी कि ये वो लर्निंग है जिसमें स्मॉल फ्रेम्स में एक बच्चे को इंफॉर्मेशन दी जाती है, बिट्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू टीच टू द लर्नर्स डिफरेंट लेटर्स, हाउ वी विल टीच द लर्नर्स थ्रू प्रोग्रामेड लर्निंग डिफरेंट लेटर्स. हम पहले लर्नर को स्मॉल फ्रेम देंगे इन द फॉर्म ऑफ लेटर ए. जब वो लेटर ए सीखेगा उसके बाद दूसरा फ्रेम देंगे लेटर बी. जब वो लेटर बी सीखेगा तो उसके बाद तीसरा फ्रेम देंगे लेटर सी. लेटर सी के बाद लेटर डी देंगे. लेटर डी को कंप्लीट करने के बाद लेटर ई देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरीके से अगर हमें बच्चों को काउंटिंग सिखानी है तो काउंटिंग सिखाने के लिए पहले हम उनमें न्यूमेरिकल्स की पहचान करवाएंगे कि फर्स्ट लर्न द न्यूमेरिकल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5. As per programmed learning is concerned, it is systematic in nature. जब तक कि एक लर्नर पहला फ्रेम, पहला स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसे दूसरे फ्रेम तक इजाज़त नहीं दी जाती है. When the learner
learners first frame, then second frame is giving. जब वो second frame सीखता है, then third frame is giving, and so on and so forth. Actually, the programming learning, as we already discussed, this is the concept which is given by B.F. Sickner. How through the mechanism of programmed learning we can bring the perfection in the learner. किस तरीके से तमाम learners में हम perfection लाएंगे. And more advantage of programmed learning is, यहाँ पर competition नहीं होता है. जब competition नहीं होता है तो learner को कम chance होता है कि to become victim of frustration. Learners में frustration develop नहीं हो जाती है, क्योंकि every learner जो है that learns as per one's own pace. Dear students, programmed learning का बहुत बड़ा एक advantage है. Every learner learns according to one's own pace. यहाँ पर कोई competition नहीं होता है. अगर किसी लर्नर को 4 मिनट लगते हैं या 4 घंटे लगते हैं एक फ्रेम सीखने के लिए, दूसरे को लगते हैं 2 घंटे, तीसरे को लगते हैं 1 घंटा, चौथे को लगता है आधा घंटा, अपनी अपनी लेवल से सब चलते हैं. प्रोग्रामिंग लर्निंग में कोई कंपटीशन का यानी कि माहौल नहीं होता है, बिकॉज प्रोग्रामर लर्निंग इज बेस्ड ऑन दैट एवरी लर्नर लर्नर्स एज पर वन्स ओन पेस, एज पर वन्स ओन कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज. जिसमें जितनी ताकत होती है अपनी ताकत के हिसाब से, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपनी पेस से लर्न करता है. तो यहाँ पर कम चांस होते हैं बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होना. यहाँ पर बच्चे को चांसेस नहीं होते टू बिकम विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो मुझसे आगे चला गया, मैं ही पीछे रह गया. क्योंकि प्रोग्रामर लर्निंग का बड़ा कंट्रीब्यूशन था. इट इज फ्री फ्रॉम द आई मीन टू से यू कंपटीशन. Every learner has to learn as per one's own capacities, capabilities and pace. और हर एक इंफॉर्मेशन जो बच्चे को मिलती है वो स्मॉल फ्रेम्स में मिलती है. जब वो एक छोटे फ्रेम को कंप्लीट करता है तब दूसरा फ्रेम दिया जाता है, जब दूसरा फ्रेम वो कंप्लीट करता है तब तीसरा फ्रेम दिया जाता है. So this was the main contribution given by the B.F. Sickner, that is in the form of programmed learning. These were the various educational implications of operant conditioning theory. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.